Okay. So, today we'll talk about Atomic Energy Commission. Similar to space technology, we also saw Department of Space. We talked about ISRO. ISRO ro bahut sara agency, right? Similarly, here we are talking about Atomic Energy Commission. So, which established in 1948. Then, if you see, there is Atomic Energy Regulatory Board that is in 1983 ରେ ଆସିଲା 1954 ରେ ବି ସେ ମଝିରେ ଆସିଥିଲା 1948 ପରେ 1954 ରେ ଆସିଲା Department of Atomic Energy. The way we are having Department of Space, similarly we have Department of Atomic Energy. So which created in 1954. Then 1983 ରେ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଲେ Atomic Energy Regulatory Body କି ତାକୁ ରେଗୁଲେଟରି କରିବାର ଅଛି ବିକଜ ତମେ ଶୁଣିଲ ନା ସେ ଯୋଉ IAEA ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଟ୍ରାଏ କରିବ ରେଗୁଲେସନ ଦେବା ପାଇଁ କି ଚେକ୍ କରିବ ଆସିକି କି ତମେ ଯୋଉ ୟୁରାନିୟମ ର ଏନରିଚମେଣ୍ଟ କରୁଛ ତମେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କରୁଛ ତମ ପାଖରେ ଯୋଉ ୟୁରାନିୟମ ଅଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୟୁରାନିୟମ ବଗେରା ସେଥିରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ U235 ଅଛି ତମେ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ କରୁଛ ନା ନାହିଁ ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରନ୍ତି ରାଇଟ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଦେଖିଲେ କି ଆମକୁ ରେଗୁଲେଟରି ବଡି ଗୋଟେ ଦରକାର ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ରେଗୁଲେଟରି ବଡି ତିଆରି କଲେ 1983 ରେ So under Department of Atomic Energy, we are having Nuclear Power Corporation. This is related to electricity. So most probably ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆସିବ ସବୁ ଗୁଡା electricity related ଆସିବ okay ଭାରତୀୟ ନାବିକ ବିଦ୍ୟୁତ ନିଗମ again ବିଦ୍ୟୁତ electricity Electronics Corporation of India Uranium Corporation of India Heavy Water Board because in nuclear reactor we require heavy water that's why there is a heavy water board so in heavy water we will talk about D2O okay then nuclear fuel complex so similarly under nuclear power corporation of India they are what they are doing is executing projects operating nuclear power plants electricity generations similarly bharatiya navik vidyut nigam bharatiya navikiya vidyut nigam installation of fast reactors जो न्यूक्लियर रिएक्टर गुड़ा जो थ्रू कि विद्युत संचार हम राइट विद्युत जनरेशन हम से सब काम को किए देखे इंस्टॉलेशन को भारतीय नाविकीय विद्युत निगम न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन दे आर एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट एंड ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट जोठी जोठी न्यूक्लियर पावर प्लांट अछि ताहार ऑपरेशन किए करूची ना न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दे विल रिएक्टर कंट्रोल एंड इंप्लीमेंटेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रिएक्टर रो जो कंट्रोल कि हमको केते मात्रा रे जो रिएक्टर टा चलेबो विल टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्टर दिस इज वन काइंड ऑफ रिएक्टर ओके सो विल टॉक अबाउट कि ए जो न्यूक्लियर रिएक्टर टा को कंट्रोल करिया पई जो डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट दरकार एंड ऑब्वियसली ए जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दरकार हो इट इज नॉट ए नॉर्मल इक्विपमेंट करेक्ट नो बिकॉज़ भितरे तमरो न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो एते मात्रा रो एनर्जी जनरेट होतो दैट मींस हमको सेही भलिया मेटल दरकार सेही भलिया मटेरियल दरकार जे कि सस्टेन करि पारथो सेति की हीट को कंट्रोल रे रखतो करेक्ट एमिति नुह कि तमे गोटे लुहार गोटे जस्ट सिंपल लुहा गोटे आनि कि ता भीतर तमे ट्राई करिवो न्यूक्लियर रिएक्शन करिया पई करि परिवो कि obviously करि परिवोनी राइट दैट मींस जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट गुडा दरकार इक्विपमेंट गुडा दरकार तार प्रॉपर मेंटेनेंस पई देयर इज ए बोर्ड कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नेक्स्ट यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल सो व्हाट इज द न्यूक्लियर फ्यूल U235 करेक्ट नो या फिर प्लूटोनियम 239 ए दिटा को तुम यूज करिवो तो वर्तमान एनरिच यूरेनियम तुमको दरकार सो जो यूरेनियम को केते मात्रा रे एनरिच कराबो नॉर्मली तो 0.7 मिलुची नॉर्मल जदि तुम देखियो यूरेनियम 238 रहउची 99.3 एंड U235 रहउची 0.7% बट हमको दरकार कोन ना अप टू 20% दरकार न्यू रिएक्टर पई तो ताकू जो एनरिचमेंट ता पई हमर बोर्ड कोन ना यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देन देयर इज हेवी वाटर बोर्ड production of heavy water used as a moderator and coolant in the reactor operator in 6 plants so basically reaction टा एते जदी फास्ट हैला देन जणा पड़ला कि ताकू हमको स्लो करिवार अछि अदरवाइज जो इक्विपमेंट ओडा अछि से इक्विपमेंट भी तरली जाय पारे तेनु मॉडरेटर भलिया कि रिएक्शन को मते स्लो करिवार अछि स्लो कले मु धीरे 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 करिक फेज बाय फेज जनरेट करि परिबी इलेक्ट्रिसिटी तो से जो स्लो करिया पई रिएक्शन टा को मॉडरेट करिया पई हमें यूज करू जे कोन ना हेवी वाटर कूलांट कि एते मात्रा रे भीतर गरम होची तमे जानथिबो ना कि बाइक चलेला या फिर कार चलेला जनरली सेथरे कोन यूज हुए ना आइदर एयर फिल्टर सॉरी एयर कूलांट और ऑयल कूलांट यूज हुए तो कूलांट कोन करबो जेतले इंजन तातु जायथुवा ताको ट्राई करबो से हेल्प करिया पई कूल करिया पई ताकि सी गोटे जिंस अधिक हीट हेले ऑब्वियसली फ्यूचर रे ब्रेकडाउन होबो तमे देखिथिबो लैपटॉप वगैरह रे फैन चले मोस्ट प्रोबब्ली गेमिंग लैपटॉप जो गुडा जेतले लैपटॉप रो प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हवा को लागिवो तो सेतले हीट जनरेट हो सी अगेन से प्रोसेसिंग वगैरह केमति हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेक्ट नो जेते अधिक प्रोसेसिंग सेते इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन होतो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन माने अगेन से माने रिलीज करबे एनर्जी एंड से एनर्जी लागी अगेन तम लैपटॉप हीट जनरेट करबो
से हीट को कूलांट भले किए काम करियो फैन करेक्ट देखिथिबो ना যেতବେଳେ ଅଧିକ ପ୍ରୋसेसिंग ହେଇଯିବ ଫ୍ୟାନ୍ ତାତିଯିବ ସେତେବେଳେ ସରି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ତାତିଯିବ ସେତେବେଳେ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସିମିଲାରଲି ଇନ୍ କାର ଅଲସୋ ଦ operation is in same way engine ବହୁତ ଜୋରେ ତାତିଲା there is a fan which will try to cool the engine okay in same concept here in case of nuclear reactor because nuclear reactor there will be heavy amount of energy will be generated कि जोथिरे बहुत गरम हो से गरम को कंट्रोल करिया पे D2O यूज हुए as a coolant as well as moderator to slow down the reaction then there is nuclear fuel complex supply of nuclear fuel bundles and reactor core components कि जो न्यूक्लियर फ्यूएल जो उड़ा अछि लाइक U235 हला प्लूटोनियम 239 वगैरह हला याकू से माने ट्राई करंती प्रोवाइड करिया पे न्यूक्लियर फ्यूएल कॉम्प्लेक्स दिस इज नॉट दैट मच रिक्वायर्ड बट एटलीस्ट यू अंडरस्टूड these are what are their components and what are the functions of these particular departments is that clear under nuclear basically atomic energy department there is nuclear power corporation there is bharatiya navik vidyut nigam electronics corporation uranium corporation heavy water board and nuclear fuel complexes next very important the next concept is related to nuclear reactor working this is the simplest one first we need to understand it then we'll go step by step phase 1 phase 2 phase 3 okay stage 1 stage 2 stage 3 so in nuclear reactor you already know what will be the fuel fissile or fertile material fissile material correct no otherwise how you will proceed with the reaction fertile material हेले तुमको गोटे हाई अमाउंट रो एनर्जी दरकार जोथरे कि गोटे न्यूट्रॉन को आनी कि तमे बॉम्बार्डमेंट करिवो का सहित ना गोटे फर्टाइल मटेरियल सहित ताकि से ब्रेक डाउन हबो फिजाइल बनिवा पे किंतु हमको सेटा दरकार नै हमको दरकार कोन गोटे ऑलरेडी जदी फर्टाइल मटेरियल थिबो मु जस्ट गोटे न्यूट्रॉन टे ऐड करबी से तार रिएक्शन हबा स्टार्ट कर दो सो वी रिक्वायर्ड फिजाइल मटेरियल एंड व्हाट विल बी द फिजाइल मटेरियल U235 प्लूटोनियम 239 देन नाउ द रिएक्शन विल बी सो फास्ट तो से फास्ट टा को हमको जदी कंट्रोल करियार अछि देन वी विल यूज व्हाट मॉडरेटर टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स example water or heavy water see you know the reaction will only takes place when the neutron will be added correct no तो ए न्यूट्रॉन जेतले U235 पाखरे आसी पहुंचीबो सेतिके बेले रिएक्शन हबो किंतु जदी न्यूट्रॉन को मु ही आपको गोटे ब्रेक दे देबी आपको मु स्लो करे देबी ये जेतिकी फास्ट रे आसुथिला लेट सपोज 10 किलोमीटर पर आवर रे आसुथिला बट आपको मु कहबी कि नहीं आपको किसी गोटे पानी द्वारा रखी देबी D2O वगैरह प्रोवाइड करी गोटे कूलांट गोटे मॉडरेटर वगैरह यूज करके रखी देबी ताकि ये 10 किलोमीटर आर जो स्पीड थिला जो रेट रे ये U235 सहित आसी मिसुथिला ये हे जो 1 किलोमीटर पर आवर ता माने जदी ये गोटे सेकंड रे पळे आस्तला ऑब्वियसली एठी वर्तन ताको 10 सेकंड लागियो हां कि नहीं ओके दैट मींस जो रिएक्शन ता स्पॉन्टेनियस हे दांदा से रिएक्शन ता वर्तन चेक हला मींस वी आर ट्राइंग टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन जोटा कि कहा द्वारा ना गोटे हेवी वाटर द्वारा जनरली वाटर यूज हुए और हेवी वाटर तो मोस्ट प्रोबब्ली वी यूज हेवी वाटर देन what is the coolant it is nothing but it will absorb the heat from the reaction and water will be used as a coolant तो तमे मते वाटर जगह रे तमे पेट्रोल यूज करि परिबो कि पेट्रोल अब्जॉर्ब करिवो कि बिकॉज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड अगेन से चलिवो माने आहुरी अधिक एनर्जी प्रोड्यूस होवा स्टार्ट हो करेक्ट नो एंड ब्लास्ट भी जाय पारे एनीवे controller to stop the reaction by absorbing neutrons again see process is very simple once you understand that reaction right reaction रो formula जोटा थला U235 रे गोटे न्यूट्रॉन मु ऐड कली न्यूट्रॉन टा होचे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन सिए जाय कि जेतले U235 सहित लागिवो ता परे से बेरियम आउट ट्रिप्टन रे चेंज होबो एंड तीनटा न्यूट्रॉन प्रोवाइड करबो कथा होचे जो तीनटा न्यूट्रॉन प्रोवाइड हला ताकू ही मु जदी बंद कर देली ताकू आ मु ट्राई करबी कि ताकू मु रोकी देबी ताकि से U235 सहित लागिवोनी दैट मींस दिस इज अ कंट्रोलर जो कंट्रोलर रो काम कोन ना जो नेक्स्ट जो तीनटा न्यूट्रॉन बाहरिला से न्यूट्रॉन को ही मु जगी देबी ताकू ही मु अलाउ करबिनी कि भाई तमे जाय कि रिएक्शन करो यू अंडरस्टूड okay so here what we are using in case of controller we are using cadmium and boron now what will happen the neutron which will be coming out of 235 basically formula kon thila U235 plus gote neutron it will release barium plus krypton plus 3 neutrons right ये जो तीनटा न्यूट्रॉन ये तीनटा न्यूट्रॉन जदी मु कहबे कि गोटे बोरॉन या फिर कैडमियम यूज कर देली ए तीनटा न्यूट्रॉन कोन आसे बोरॉन रो जदी तमे देखियो वैलेंसी अराउंड 3 राइट सो एमाने ट्राई करिवे कोन आसे कि बोरॉन आ कैडमियम एमान को सहित लागि जिवे तो एमाने गोटे चेक कर देबे कोन कि ये जो तीनटा न्यूट्रॉन फर्दर बाहर छि जोटा कि अगेन रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करि थांदा ताको से माने चेक कर देबे सो दीज आर बिहेविंग एज कंट्रोलर्स then there is mean containment so this is if you see this whole thing is related to containment
it is related to safety barrier made of concrete or steel to prevent any heat or radioactive exposure, because आ भितर uranium 235 अछि जोटा कि sufficient heat बाहर को पठे दबो, तेनु ताकू हमकु ए सबु तक रिएक्टर टाकू हमकु रखिया पड़ियो गोटे पूरा completely sealed वाला, आइदर कंक्रीट माने सीमेंट विमेंट बगने की ताकू पूरा कंक्रीट गोटे रूम भीतर रखो कि इन केस देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ रेडियोएक्टिव एक्सपोजर, बाहर को किसी कौन सी प्रकार रेडियो एक्टिविटी रिलेटेड एक्सपोजर न हवा दरकार, कौन सी प्रकार हीट बाहर को न आसवा दरकार, नहले जना पड़ले कि पूरा रिएक्टर ही नष्ट हो गला। ओके, सो इफ यू सी दिस इज व्हाट रिएक्टर वेसल, जहां भीतर तमे कोन रखुछ U235। ओके, देन देयर विल बी कंट्रोल्ड रॉड्स, सो इफ यू सी these rods, so these rods will be made up of what? बोरोन एंड कार्डमियम, करेक्ट। तो जेतेला हमको दरकार पड़िबो आमे ताको एक्टिवेट करले जो न्यूट्रॉन टाको हमको धीरे धीरे बंद कर मत रिएक्शन टाको बंद करियार अछि, देन कंट्रोल रॉड जोड़ा अछि ताको मु एक्टिवेट करिवि माने न्यूट्रॉन गुडा को ऑब्जर्व करनबो किए ना बोरोन आउ कार्डमियम वाला कंट्रोल रॉड्स, and there will be certain fuel rods we will talk about in detail. So now if you see control rods will be cadmium or boron. Now we are providing what? We are providing water. Now this is very important. तमे बर्तमान मते को एठु तो एनर्जी थिला राइट, ए एनर्जी रो मु इलेक्ट्रिसिटी केताले जनरेट करिवि जेते बेले मु किछि गोटे जिंस छाडीबी, जो जिंसटा लिक्विड अछि से जिंसटा कन्वर्ट हबो कोथिरे? गैस रे, करेक्ट नो? जदि सेटा कन्वर्ट हे परला गैस रे, से गैस जाय कि गोटे टरबाइन को बुले दबो, ट्रू? जनरली तमे जदि देखिबो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सेठी तमे कोन करूछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक रे तमे डायरेक्ट पानी आसुची ताकू डायरेक्ट से कोन करूची टरबाइन को बुलोची, दैट इज वन वे। सेकंड वे पानी अछि ताकू तमे कोयला द्वारा या किछि भी द्वारा ताकू गरम करो, जो बांफ बाहरियो राइट, जो गैस बाहरियो से गैस टा जाय कि टरबाइन को घुरेबो एंड टरबाइन रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। एठी भी सेम कांसेप्ट, बर्तमान मु इंस्टेड ऑफ कोल ताकू कोयला या फिर काठ फाट द्वारा न गरम करिकी ताकू मु कोउथरे गरम करूची ना न्यूक्लियर रिएक्टर रे, एठी सफिशिएंट अमाउंट रो हीट जनरेट हो, सेही हीट सफिशिएंट कि ए जो वाटर अछि, जो वाटर टा कि मॉडरेट भलिया यूज करिवो, कूलांट भलिया भी यूज करिवो, सेही वाटर टाकू से एते मात्रा रे गरम कर दबो कि सेथरु गैस बारिवो एंड से गैस जाई कि कोन करिवो गोटे टरबाइन को बुले दबो, टरबाइन को बुलेओ माने देयर विल बी रोटेशनल मोशन, दैट रोटेशनल मोशन विल बी कन्वर्टेड थ्रू द जनरेटर, बेसिकली रोटेशनल रो काइनेटिक, because rotational is nothing but kinetic motion, तो जो थ्रे की kinetic motion convert हबो जनरेटर द्वारा इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी रे ग्रिड रो हेकी घर को इलेक्ट्रिसिटी पहुंच परियो। इज दैट क्लियर? ओके, एंड एठी कोन हबो जो गैस टा आसिला एठी टरबाइन लागिला, टरबाइन को से बुलेला, बुलेला परे एठी तो हमें जो काइनेटिक एनर्जी ताको हमें जनरेटर द्वारा हमें कन्वर्ट करके हमें ग्रिड को नै गले, बट वाटर को हमें स्टिल रखिले, वाटर पुणी आसिला एठी की एठी कंडेंसेशन लागि छि, तो गैस ठंडा हे जिवो, ठंडा हे गले अगेन वाटर हे जिवो, से वाटर को हमें पुणी यूज करि परिबा। सो बेसिकली इट विल बी ए रोटेशनल वाला साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर? न्यूक्लियर रिएक्टर रो वर्किंग, एनी डाउट? Okay, now the question is what is the use of water in these reactions? First one, it will be behave as coolant, it will be behave as moderator. Second, it will behave as like to rotate the turbine, which will ultimately generate the electricity. Correct? No? Okay. Next, types of nuclear reactor. So nuclear reactors are types ketata. Now there is light water reactor. So water can be used as normal H2O or D2O. So based upon different type of material used for the liquid, basically for the coolant, either you are using coolant or moderator as normal water or heavy water. So based upon that we have different name for the reactor. The first one is light water reactor where H2O will be used. So we call it as boiling water reactor or pressurized water reactor. We'll talk about what is pressurized, how we are increasing the pressure. Okay. So in physics, there are certain concepts. If you increase the pressure, boiling point also increases. कि जदि तमे pressure अधिक increase करिवो, then तारा boiling point भी increase हबो. That means I am trying to say that more the pressure, more will be the boiling point. Clear? Okay. Then water boils generally at 100 degrees Celsius, but pressure cooker, if you see there, because their creation of pressure, it will boil at 120 degrees Celsius. Similarly, at high altitude, cooking requires more time because there are less, if as air pressure decreases, water will boil at 70 degrees Celsius.
water will boil at 70 degrees Celsius. Where at high altitude, if you see what air ro jo pressure अछि se pressure decrease हो जाए. Pressure decrease हो माने boiling point भी decrease हो जाए. Water boil होगा 70 degrees Celsius रे start हो जाए boil होगा. Okay. Now, if you see here, why we are saying if the pressure is more, the boiling point will be more. Correct no? And boiling point आमे कहीं use करूचे एठी? गैस क्रिएट कर जो स्टीम तार बाहर करेक्ट जो गैस टा कि मते हां जो स्टीम टा क्रिएशन हैला पारे जोटा कि मोर टरबाइन को बुलेबो करेक्ट नो एंड मु जदी प्रेशर अधिक देबी ता माने बॉइलिंग पॉइंट बहुत बिकॉज़ बॉइलिंग पॉइंट अच्छी अछि जोटा कि बॉइलिंग पॉइंट टा को मते इंक्रीज करियार अछि दैट मींस मु एफिशिएंटली आहुरी मोर एंड मोर मु इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर करू विल टॉक अबाउट इट हाउ इट विल हैपन सो we have only two things in case of light water reactor there is boiling water reactor and pressurized water reactor. Similarly, for heavy water, where we will use D2O, we will have a boiling water reactor and we will have pressurized water reactor. And there is something called fast breeder reactor. We will talk about it in later. But first, we will see what is boiling water reactor and what is pressurized water reactor. Boiling water reactor we talked about in the first phase, like the nuclear reactor process. This is what we called boiling water reactor. Water asila, then it boil hela, boiling hela pore, then seti turbine ku bulela, then again asi condensation ହେଇଗଲା. Again ପୁଣି ସେ water ପୁଣି ଗଲା boiling ହେଲା. ଯଦି ମତେ reaction stop କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ କାହାର help ନବାକୁ ପଡିବ controlling rods ର. Controlling rods ରେ କଣ ଆମେ use କରୁଛେ? स्टील और सीमेंट बोरोन और कार्बन No, that is like not to make a exposure of the radioactivity. सर बोरॉन को कैडमियम Boron and cadmium, correct. Next, pressurized water reactor. If you see, everything will be similar, but there will be one more addition here. Otherwise, it will be remain same, right? And there will be pressurizer here. So here, what will happen? The water in the reactor is being pressurized. जो water अच्छी reactor रे जो water टाको use करते हैं, ताको हमें pressure दे दवा. यदि ताको pressure दे दवा, तार boiling point बढ़ी जाएगा. Correct? No. So as the pressure gets higher, the boiling point of water also increases. At high pressure, the water can operate at extremely high temperature without boiling to steam. See, ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି ଆମକୁ steam ଦରକାର, but the same time ଆମକୁ water ବି ଦରକାର ଯୋଉଟା କି slow down କରିବ. କାହାକୁ? न्यूट्रॉन को. Correct? No. ବୁଝି ହଉଛି ନା ବୁଝି ହଉନି? See, ଆମକୁ water ବି ଦରକାର ଯୋଉଟା କି reaction କୁ slow down କରିବ, control କରିବ, coolant ଭଳିଆ use କରିବ. ତ ଭାବ ତମେ ଯଦି water normally 100 डिग्री सेल्सियस रे boiling point, right? 100 डिग्री सेल्सियस रे ଯଦି boil ହେଇଗଲା, एठी तो केबे तुमको water मिलिबो ही नहीं, हां कि नहीं? रिएक्टर रे नॉर्मल वाटर रिएक्टर रे तुमको वाटर मिलिबो कि? सब बेले तो से स्टीम हे जिवो डायरेक्टली स्टीम हे जिवो तो बर्तन मते किंतु दरकार वाटर दैट मींस मते सफिशिएंट प्रेशराइज करिया पड़िबो ताकि वाटर भी किछि रहिबो जोथि पय कि रिएक्शन टा स्लो हबो अदरवाइज रिएक्शन कंटीन्यूअसली हे चलिबो एंड मते केबे वाटर मिलिबोनी देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ मॉडरेटर करेक्ट नो मीनिंग ऑफ कूलेंट ताको कूल के करिवो ताले जदि वाटर तुरंत आसिला माने तुरंत ही बॉयल हे गला तुरंत ही स्टीम हे गला ताले कूल केमति हबो सो सेथि पय हमें कोन करूचे ना एट हाई प्रेशर the water can operate at extremely at high temperature without boiling to steam that means water rahibo up to gote high temperature jae जोठी कि से steam हबनी then there will be a temperature where water will start to boil so at high pressure allows greater power output high pressure if there will be high pressure it will leads to greater power output if heavy water is used as both moderator and coolant it is called pressurized heavy water reactor so the concept is very simple कि नॉर्मल वाटर रिएक्टर रे आमे जेतले रिएक्शन स्टार्ट करछे सेतले जो कूलेंट भलिया से यूज होआ कथा से कूलेंट ता सेठी कम मात्रा रे यूज हे परिबो बट इन केस ऑफ प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर रे वाटर बिहेविंग एज ए कूलेंट विल बी फॉर लॉन्गर टाइम देन द नॉर्मल वाटर रिएक्टर इज दैट क्लियर प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर आ बॉइलिंग वाटर रिएक्टर भितर डिफरेंस एति देन जेहेतु अधिक प्रेशर माने अधिक टेम्परेचर रे से बॉयल हबो जेहेतु से अधिक टेम्परेचर रे बॉयल हबो देन तार आउटपुट रेशियो because see already there is a temperature this temperature will lead to more kinetic energy for example ultimately the heat energy will be converted to kinetic energy हाँ कि नहीं you agree now initially we are having a temperature of 100 that means this is the heat energy let's suppose this 100 will be related to heat energy this energy will be related to kinetic energy 1 now there is 200 heat energy will be related to kinetic energy 2
That means kinetic energy 1 is more or kinetic energy 2 is more. 2 is 2 is more. That means if kinetic energy, second kinetic energy is more, it will try to rotate the turbine faster, and the same Ke2, kinetic energy 2, will be converted by the generator to electricity energy. That means you will get 2 times. Correct? No, jadi ethi 100 degree Celsius रे तमर water boil होतला and एठी 200 degree Celsius होला because pressure देलो ताहले तमे एठी जो kinetic energy रू electricity पाउथिलो because it will be equal, right? Almost equal. हां कि नहीं? एठी जदि तमे electricity 100 times रो पाउथिलो एठी तमे 200 times रो पाइबो. That means you will get a electricity of 2 times because of pressurized. Is that clear? Okay, that's what we are saying. Pressurized water reactor will provide more electricity as compared to normal, like a boiling water reactor. Any doubt between boiling water reactor and pressurized water reactor? Other processor remain same. Control rods, that will be cadmium or barium. If you are using heavy water, then it will be pressurized heavy water reactor, or else it will be pressurized water reactor. Where water reactor means H2O, heavy water means D2O. Fine. Okay. The next concept is related to fast breeder reactor. Okay. Now, if I am saying fast, that means we require fast neutrons. Now, from the very clear point, fast neutron require for what? Fertile material. True. That means we are not using fissile material. So the material, like, because fissile material is not easily available. Correct? No. Fissile material तमको केतळे हबो जेतळे तमे एनरिच करियो यूरेनियम को. That means there is a cost involved. U235 को तमको खोजी खोजी आनिया को पड़ियो. हां कि नहीं? तो बर्तमान खोजिकी ताकू बाहर करके ताकू एनरिच कला ପରେ तापरे ताकू तमे न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करि परिबो जोथरे कि तमे बॉइलिंग वाटर रिएक्टर कहउछ या फिर हेवी वाटर रिएक्टर कहउछ. इन बॉइलिंग वाटर रिएक्टर और प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर रे तमे यूज करछ कोन फिजाइल मैटर. बट देयर इज अ कॉस्ट, लाइक प्री प्रोसेसिंग कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, राइट? Uranium or enrichment. But in fast breeder reactor, we are using the fast itself is called fast neutron, and fast neutron is related to fertile matter. So this breeder will be producing fissile material from fertile material. That means you take uranium 238, bombard it with fast neutron. There will be transmutions, right? So transmutation रे कौन हबो ना U235 238 जोड़ा আছে से चेंज हो प्लूटोनियम 239 रे. हां कि नहीं? Then fissile material, then the reaction will start. Is that clear? The same thing, whatever we talked yesterday, like day before yesterday, the same process, same reaction steps that we are using in fast breeder reactor. So here, if you see, this is the diagram. So here, if you see, here we are putting water. Okay. Then there is a heat exchanger. Then there are control rods. So these control rods, again, it will be same, cadmium and boron. Then there will be protected by preventing leakage by biological shielding. So there should not be, see, there we are having a shielding of concrete or some material which will try to like stop all the prevent radioactivity. exposure. Correct. It Exposure. will prevent exposure. So similarly, here we are having a biological shielding such that there should not be any exposure of this radioactivity towards the environment. So here, if you will see the red colors, if you see, those are the fissile cores, means there are U235 will get generated. Then there is something called breeder blanket where we are using U238, which are nothing but the fertile one. Then there is liquid coolant. Am I audible? Used as liquid sodium. So the coolant here we are using is liquid sodium. There is U238 as well as U235. So what will happen? The fast neutrons, they will try to heat this U238 and it will generate the fertile material. Sorry, it will generate the fissile material. That fissile material will be here. Then this fissile material will do spontaneous reactions and there will be a coolant which will be liquid sodium, and whenever there will be a spontaneous reaction, it will generate the heat. So this is a heat exchanger, and this heat exchanger, because there is heater kind of thing, right? So what will be done by this heater kind of thing? It will try to, this water you are providing, right? This water will convert into what? Steam, and that steam will try to rotate the turbine. From turbine there will be a generator and it will produce electricity. This is what we call fast breeder reactor.
You understood the difference between normal like boiling water reactor, then pressurized water reactor and fast breeder reactor? सर जो बॉक्स टारे केमिति कोन क्रिएट ला टिके तो रिपीट कर देते बायोलॉजिकल शील्डिंग भीतर जो ब्रीडर ब्लैंकेट है गुडा ब्रीडर ब्लैंकेट एठी त ना आगे सर ठीक अछि तो एठी जनरली कोन होची ना से माने ट्राई करूचंदी गोटे फास्ट न्यूट्रॉन को छाड़िया पे जदि ये फास्ट न्यूट्रॉन को से छाड़िला जो फास्ट न्यूट्रॉन गोडा गला से न्यूट्रॉन जाई कि कहां से तो बॉम्बार्डमेंट करिवो U238 हां सेतेबेले तो ए जो फिजाइल कोर गोडा अछि एगुडा सेतेबेले बनी ही नथियो ए फिजाइल कोर रे सर किछि से जो नथिबे ब्रीडर जेतेबेले ब्लैंकेट भीतर U238 अछि करेक्ट U2 बेसिकली ये जो ब्रीडर ब्लैंकेट भीतर नुवा दिस इज U235 38 ओके दिस इज द फर्टाइल मटेरियल एपटे फर्टाइल मटेरियल एपटे भी फर्टाइल मटेरियल तो बर्तमान ये जो फास्ट न्यूट्रॉन गुडा गला से माने जाके फर्टाइल मटेरियल रे बाडे हेबे देन बाडे हैला पर से माने जनरेट कोन करिवे फिजाइल मटेरियल so यस this सर will be fissile core. I mentioned U235, it can be plutonium 239 also, correct? No, once that is started then there are neutrons. See initially कौन सी नथिला हां कि नहीं initially हम पाखरे फर्टाइल मटेरियल थिला बट वर्तमान भी पुणी तमे जो फास्ट न्यूट्रॉन छाड़िबो से न्यूट्रॉन तो फर्टाइल मटेरियल को फिजाइल करिवो प्लस जदि फिजाइल सहित भी बाडे हे गला बिकॉज़ वी ऑलरेडी गॉट नाउ प्लूटोनियम 239 ता सहित जस्ट खाली गोटे न्यूट्रॉन आसी कि लागिवा दरकार एंड मु एठी तमे कहजो फास्ट न्यूट्रॉन sufficiently fast reaction start ହେଇଯିବ reaction start ମାନେ heat energy generate ହବ ए heat ଆସିला ପରେ एठी कोन कला जो heat exchanger अछि एथिरे भी coil गोडा लागिछि ए coil द्वारा heat transfer हैला जेतले एठी sufficient amount रो heat हैला हमर केवल water एठी चालुछि water आउ कुआडे जाउरी एठी तळे तमे water देलो because of heat it will convert into steam ए steam ए पडे गला turbine बुलेला electricity generate हैला clear सर गोटे टाइम रे तो सेई U235 से भीतर जो अछि से गुडा तो गोटे टाइम रे सरी जीवना चेन रिएक्शन है कि जदी सेठी सेई न्यूट्रॉन गुडा का बाहरिवो माने बॉम्बार्डमेंट ही चलिवो तो सेथरु से तो रिएक्शन नो तो तयारी करिवो एक्स्ट्रा correct न्यूट्रॉन आसी तो गोटे टाइम रे सरी जीवो ना correct U238 जोटा अछि जो U235 दिस फर्टाइल ए फर्टाइल टा गोटे टाइम रे सरी जीवो जे पर्यंत फर्टाइल अछि से पर्यंत फिजाइल जनरेट हो ही चलथिबो ओके देन फिजाइल सरी जीवो किंतु कथा होछि से सरीवाटा बहुत टाइम लागो तुमको एंडा लागुची छोटिया जिंसटा ना किंतु सेटा यस बहुत टाइम लागो एंड सफिशिएंट अमाउंट रो हीट सेतल को जनरेट भी हे जाइथिबो एंड याकू हमकू सेठी हमें रखिचे कंट्रोलिंग रॉड नल तो हमें ए दिटा को उठेई दिता ठीक अछि 5 मिनिट रिएक्शन चलियो तारे बंद हे जिवो ताले हमकू कंट्रोलिंग रॉड काहे दरकार ही नहीं करेक्ट नो तो ए रिएक्शन कंटीन्यूअसली सेमिति चलीथिबो जेहेतु कंटीन्यूअसली एटा चलीथिबो ताकू हमकू बंद करिया गले हमकू दरकार कोन कंट्रोलिंग रॉड जोथरे अगेन कैडमियम एंड बेरियम यूज हो एंड ए जो भितरे आकू ठंडा करिया पे कूलांट कोन यूज होची लिक्विड सोडियम वाटर याडे आसु ही नहीं करेक्ट नो पूर्व केस गोडा करे वाटर से भीतर ही थिला रिएक्टर रे बट एठी ये चैम्बर टा ही पूरा अलग दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग व्हाट लिक्विड सोडियम काहे ना एठी जदी तमे वाटर रखिता से वाटर भी इवापोरेट हे जो ताकू दरकार पड़ला ताकू खोली की रखो कोठी नहले एठी खोली देला माने रेडियो एक्टिव डीके जो थिला जो फास्ट न्यूट्रॉन जणा पड़ला कि रेडियो एक्टिव डीके जो गुडा होची से गुडा ही तमे बाहर को एक्सपोजर करो fine okay so यस here the reactor will produce more fissile fuel than they consume तो से माने ट्राई करिवे अधिक रु अधिक fissile fuel बाहर करिवे पे than they consume because ये फास्ट न्यूट्रॉन गला परे से जाकी बाडे हैला देन से जनरेट कला फर्टाइल मटेरियल बर्तन फर्टाइल मटेरियल आ गोटे न्यूट्रॉन जतले बाडे हेबो तो स्पॉन्टेनियसली से कोन करिवो से तीनटा पुनी न्यूट्रॉन जनरेट करिवो तो आ भितरे एते मात्रा रे हीट थिबो कि से न्यूट्रॉन काइनेटिक एनर्जी पाई जिवो तो से न्यूट्रॉन जतले काइनेटिक एनर्जी पाई गला दैट मींस दैट न्यूट्रॉन विल आल्सो दोस थ्री एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन व्हिच केम आउट राइट आफ्टर फर्टाइल U235 हैला या फिर प्लूटोनियम 239 हैला से माने जतले रिएक्शन कला पारे पुनी तीनटा न्यूट्रॉन बाहरिवो से न्यूट्रॉन पाखरे एते हीट अछि कि काइनेटिक एनर्जी रे से माने ही फास्ट न्यूट्रॉन हेबे एंड से माने पुनी ट्राई करबे आको हीट करिया पे कहा को फर्टाइल मटेरियल को अगेन फिजाइल मटेरियल क्रिएट हो बुझेला ना तो जेति की मात्रा रे कंज्यूम होची ताठो अधिक मात्रा रे फिजाइल मटेरियल जनरेट भी हो सो weak moderator such as liquid sodium used as coolant why we सर एठी जो फिजाइल मटेरियल टा थियरी में सर प्लूटोनियम जो 239 टा जो क्रिएट हबो ना plutonium 239 क्रिएट हो अच्छा सर ओके सो plutonium 239 क्रिएट हो सो नेक्स्ट होची कोन ना तमे वाटर काहे की यूज करि परिबोनी काहे की लिक्विड सोडियम एक रे तो मु तमो कहली वाटर हेले एक रे तार बॉइलिंग पॉइंट इवापोरेट हे जिवो बट एठी जदी तमे लिक्विड सोडियम यूज कलो दिस लिक्विड सोडियम इज ए वीक मॉडरेटर
आमको रिएक्शन टाकू वीक रखिवार अछि मॉडरेटर हैज टू बी वीक मॉडरेटर नॉट ए स्ट्रांग मॉडरेटर जदि स्ट्रांग मॉडरेटर हे गला ए न्यूट्रॉन को तो से पहुंचे ही दबनी फर्टाइल मैटर देन फिर फर्टाइल मैटर केबे फिजाइल ही परिबोनी करेक्ट you understood right water is a strong moderator while liquid sodium is a weak moderator because why we require weak moderator because the neutron has to be fast neutron so that fast neutron will go and hit this fertile material such that it will generate fissile matter and fissile material generate hele hi se reaction है कि heat generate करो नहले generate ही हबनी hope it is clear right okay so because we are using liquid sodium that's why it is behaving as a weak moderator as a coolant hence no slowing down of neutrons जदि slow down of neutron हे गला that means आउ reaction ही हबनी because fissile material ही नहीं fertile material को जदि तमे slow neutron दबो we already saw that there won't be any reactions right so fast neutrons are readily captured by the fertile material in the blanket producing more amount of fissile matter any doubt between these three now pressurized water reactor pressurized heavy water reactor boiling water reactor boiling heavy water reactor fast breeder reactor we completed 5 things in one go the coolant and moderator what will be the coolant in fast breeder reactor liquid sodium no liquid sodium fast breeder reactor FBR it will be liquid sodium now what will be used for steam in fast breeder reactor what will be used for steam which will try to rotate the turbine water in case of other reactors like boiling water reactor or boiling heavy water reactor heavy water or light water correct heavy water or normal water H2O right okay fine so what will be used as controller for the reactions cadmium and boron same for all the three right like whether it is a boiling water reactor or heavy pressurized water reactor or fast breeder reactor cadmium and boron those will be the controller basically they will try to capture the fast moving neutron or slow moving neutron whatever be it is they will capture the neutron when they will get activated and the reaction will stop clear okay so this is the like summary if we'll have the reactor we are having basically how many four kinds of reactor sorry five kind of reactors right we saw here no there are five types one two three four and this is one five so here if you see we are having boiling water reactor fuel kiye na enriched uranium coolant kiye na water moderator kiye same water true then pressurized water reactor enriched uranium coolant water moderator भी water for pressurized heavy water or boiling heavy water we are using what natural uranium but more reaction capacity due to the pressure natural uranium in the sense in pressurized heavy water you are using natural uranium which will have 238 concentration is more than the 235 concentration but because there is a pressure there will be more kinetic energy more pressure means it will generate see ତମେ ଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଅଛି this is piston correct no ଭାବିନି ଏଟା ଗୋଟେ ପିଷ୍ଟନ ଏଠି ଗ୍ୟାସ ଅଛି ଏ ପିଷ୍ଟନ ଟାକୁ ମୁଁ ତଳକୁ ଦବେଇଲି ଦେନ୍ ହବ କଣ ଭଲ୍ୟୁମ କମିବ ଭଲ୍ୟୁମ କମିଯିବ ନା ଆଗରୁ ଯେତିକି ଭଲ୍ୟୁମ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେତିକି ଭଲ୍ୟୁମ ରହିବ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ୍ୟୁମ କମିଲା ଆଗରୁ ଭାବିନିଅ ଏଇ ଭଲ୍ୟୁମ ରେ 100ଟା ପାର୍ଟିକଲ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ତକ 100ଟା ପାର୍ଟିକଲ କମ ଭଲ୍ୟୁମ ରେ ରହିବେ ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ହବ যেহেতু movement fast হবো that means the neutron which will be there in the pressurized like heavy water reactor what will happen that neutron will moving very fast so ultimately even if I will use natural uranium where you will have 238 the fertile matter will convert to fissile matter and the reaction will start clear see even in pressurized heavy water reactor you can use U235 but even if you use natural uranium also because of the pressure that natural uranium will convert it to fissile material why because the neutron which will be there due to the pressure it will behave as a fast moving neutron and it will try to convert the fertile material to fissile material and the reaction will start coolant will be heavy water and moderator will be heavy water in fast breeder reactor there will be plutonium or uranium or thorium
you can use any, right? So the fertile material we will use. So the fertile material, for example, U235, U238 you are using, then you will get a fissile core which will be plutonium 239. So the coolant will be liquid sodium, but the moderator, there is no moderator because this liquid sodium itself is a weak moderator and we don't require moderator. Moderator जदि तमे यूज करिवो देन ए जो फास्ट मूविंग न्यूट्रल से गुडा ही स्लो होइजबे, देन तमे जो फर्टाइल मटेरियल यूज करछो फर्टाइल मटेरियल यूज ही पर माने बेसिकली रिएक्शन रे कन्वर्ट ही परिबो फिजाइल. You understood, right? So the question here will be, in fast breeder reactor do we have a moderator? Can we use a heavy moderator? Answer will be no. No, sir. Okay, so generally liquid sodium is used as a coolant, not as a moderator, and parallelly it is a very weak moderator also. Why it is very weak moderator? Because it doesn't have that much strength as like water or heavy water. Okay, जोटा कि गोटे न्यूट्रॉन को कंट्रोल कर देबे बट सोडियम कंट्रोल करि परिबो. Okay, next, Indian 3-stage nuclear program. So now we came into this part: stage 1, stage 2, stage 3. So India रो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट अछि से माने कोन ट्राई करछन्ती 3-stage न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया रो अछि जोटा कि से माने ट्राई करछन्ती इंप्लीमेंट करिया पाई. So stage 1, it is functional, means in current stage what we have is stage 1, means we have pressurized heavy water reactors. It is operational since 1973 and it is in commercial stage. That means we are producing electricity, that electricity we are selling also. Okay, that means it ame paisa hi pause and commercial and we are getting a profit. How much it is generating? 12 gigawatt of energy it is generating for 30 years. Gigawatt of electricity it is generating and it will generate for what? 30 years. So what we are using? Natural uranium. Jodi pressurized heavy water ame कहले pressurized. If you will use natural uranium, because of the pressure, the neutrons which used to be slow, that will be going as very fast because of the pressure. Pressure create hela, neutron fast hela. Natural uranium U238 अछि ताकू जाय कि हिट करिवो गोटे फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, देन जनरेट हबो कोन ना लेट सपोज प्लूटोनियम 239, देन सीए कोन करिवो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो. क्लियर? So U235 undergoes fission, produce heat, and U238 produce plutonium 239. This is what I told. Natural uranium, at least some amount of U239 अछि ना नहीं? 0.7% U235 अछि, right? तो से U235 सीए तो कन्वर्ट हो रिएक्शन करिया पई, देन सीए जो न्यूट्रॉन जनरेट करियो बिकॉज ऑफ द प्रेशर, से प्रेशर एते मात्रा रे अछि कि से जो न्यूट्रॉन आसीबे से माने ही फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन हे जिवे, से माने ट्राई करबे कहा सहित बाड़िया पई U238 को बाड़े हे कि प्लूटोनियम 239 जनरेट. देन प्लूटोनियम 239 जनरेट हला पारे सी हियर, this is what it is called second stage. Basically in second stage, this whatever is the output that is going to used in the second stage. Here what we are trying to do is with natural uranium whatever we have very limited concentration U235 which is just 0.7%. सेही थ्रू आमे जति इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करू that is called stage 1. stage 2 कोन जे मते को तमे नेचुरल यूरेनियम को गोटे बॉइलिंग हेवी वाटर रिएक्टर रे तमे यूज करि परिबो? रिएक्शन ही हबनी. केते रिएक्शन हबो? जस्ट सेथरे 0.7 मात्रा रथिबो हां कि नै? सी रिएक्शन हबनी इन द सेंस नेचुरल यूरेनियम U235 रो कंसंट्रेशन केते 0.7%. तो जो 0.7% थिबो ता सहित जेतले गोटे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन लागिला, मु कहा कथा कहूची, मु कहूची बॉइलिंग वाटर रिएक्टर जोथरे प्रेशर किछि नै, सिए कोन करिवो? U238 जो 99.3% अछि तार तो कोनोसी रिएक्शन ही हबनी. बाकी स्लो रहला डाउन जो कर दस. हाँ 0.7% रो जो U235 अछि that will go for the reaction, means output ratio is बहुत कम जदि तमे गोटे नेचुरल यूरेनियम यूज कलो फॉर बॉइलिंग वाटर रिएक्टर. बट जदि हेवी वाटर रिएक्टर रे तमे यूज करिवो नेचुरल यूरेनियम, that means जो U235 अछि सेटा तो कन्वर्ट हे गला, एनर्जी दे देला, that is stage 1. बट stage 2 रे कोन हबो? जो U235 अछि because it is pressurized, जो न्यूट्रॉन बाहरिले ये U235 थिला, U235 बर्तमान तीनटा न्यूट्रॉन देला, से न्यूट्रॉन को मु प्रेशर अप्लाई हिची, से न्यूट्रॉन बर्तमान फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, से माने जो U235 अछि U38 अछि ताकू से माने प्लूटोनियम रे कन्वर्ट कर देबे. दैट मींस आई एम गेटिंग फिजाइल मटेरियल नाउ. दैट फिजाइल मटेरियल आई विल यूज इन द सेकंड स्टेज. So stage 2 is called fast breeder reactor. In fast breeder reactor
बेसिकली यू रिमेंबर U238 तमे यूज करूतला फर्टाइल मटेरियल हां कि नहीं. See, this is a concept. Okay, this is the concept actually we are trying to discuss. कि आपको आमे तीनटा स्टेज रे गोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट रे बर्तमान आमे डिस्कस करूचे केवल स्टेज 1 स्टेज 2 सहित आमे दिस इज रेडी बट नॉट एट कमर्शियल लेवल. बर्तमान जो सेकंड स्टेज ये रेडी हे अछि बर्तमान आपको आमे कमर्शियली बर्तमान यूज ही करि पारने. तो बर्तमान मु कोन कहूची कि आमे जहां भी बर्तमान इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते एंड कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करूचे दैट इज थ्रू स्टेज 1 ओनली. कि जो फिजाइल मटेरियल अछि से फिजाइल मटेरियल जो फर्टाइल होछि ताको आमे यूज ही करि पाबे. तार रिलेटेड टेक्नोलॉजी हम बाहर बर्तमान नाही. ताको आमे बर्तमान कोन करूचे सी बेसिकली टेक्नोलॉजी अछि बट आमे बर्तमान ताको रेडी स्टेज रे रखि आमे कोनोसी कमर्शियल प्रोडक्शन करूनी. बेसिकली एठु तमे जानिलो कोन U235 जोटा थिला सेटा तो कंज्यूम हे गला इलेक्ट्रिसिटी दे देला. U238 सी कन्वर्ट हे गला प्लूटोनियम 239 रे फिजाइल हे गला. मते बर्तमान तमे को ए जो फर्टाइल रो फिजाइल एटा आमे कोठी पढितले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हां कि नहीं. Okay, so this fast breeder reactor operational since 1985. We understood कि okay there is something कि जो U238 थिला that will convert to fissile when the fast neutron will try to hit it. Technology demonstration stage. This is in technology demonstration. See, this demonstration I am talking about in space technology. Space technology रे भी हमें technological demonstration करू हां कि नहीं. That means successfully हमें किछि लॉन्च करिवे पद हमें जस्ट कोटे टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखैछु कि हां एमिति हेई पारिबो. So how much it is generating? If you see 300 gigawatt of electricity it will generate for 30 years. If once it will start, see this is what, if once it will start, one nuclear reactor, if it will start working in stage 1, it will generate 12 gigawatt of electricity for 30 years. Similarly, if the stage 2, once it will start, it will generate 300 gigawatt of electricity in 30 years. But still don't have commercial use. We are having here till here. Now what will happen? Here we are having plutonium. Now this plutonium it will try to hit by a simple. Can you tell me plutonium 239 do we require fast moving neutron? No, sir. No, right? Already that is fertile, sorry, that is already fissile. That means you require only a slow moving neutron. बर्तन slow moving neutron असला परे सी बर्तन भांगीबो. करेक्ट नो. एंड मते तमे को एथिरे पुनी नेचुरल यूरेनियम किछि ना किछि थिबो ना नै एठी जो थिबो किछि तो प्लूटोनियम रे कन्वर्ट हे जातो स्टिल किछि ए पर्यंत कन्वर्ट हेइनी. बिटवीन यूरेनियम एंड प्लूटोनियम ता मझरे किए थिला थोरियम. करेक्ट नो. जदि तमे एठी देखिबो से जो रिएक्शन between uranium and plutonium, okay, not thorium, thorium रा थिला केते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 232. okay, so बर्तमान से माने कोन कहउछन्ती ना ए जो फास्ट रिएक्शन अछि सो सेकंड स्टेज रे एक्सटर्नली थोरियम इज बीइंग एडेड. कोन कहली मु सेकंड स्टेज रे एक्सटर्नली व्हाट यू आर एडिंग थोरियम. एंड थोरियम रा केते ना 232. 232 means it is fertile. Yes sir. सेकंड स्टेज रे तबे प्रोवाइड करिसो कोन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन. Yes sir. It is fast breeder reaction. It is not pressurized wala. Yes sir. Correct. That means this thorium will remain as it is unless until there is a fast moving electron. True. Yes sir. Okay. Now what will happen? This thorium, whenever it will go to the next, basically what it will do is it will absorb one neutron, okay, and it will become U233, uranium 233. See, till now we talked about uranium 235, we talked about uranium 238, but uranium 233, when it will become, when the thorium 232 will absorb one more neutron and it will become U233. Okay, now the third stage, it is called advanced reactor. We don't have it, not available yet. Basically the technology itself is not available with India. So to get uranium 233, at least here what we require is thorium. So thorium has to add it, then we will get 233. Is it fertile or fissile? 233 is fissile. Fissile. That means we again require what? Slow moving Slow neutron. moving reactor. And it will try to again produce. Again we are giving thorium. Thorium will convert into U233 and it will produce again and again, right? And it will generate what? 500 gigawatt of electricity for 500 years. Now this is what our goal to achieve.
the stage 3. So Indian 3-stage nuclear power program: stage 1, stage 2, stage 3. Stage 1, pressurized heavy water reactor. Stage 2, fast breeder reactor. Stage 3, advanced reactor. See, already there was a UPSC questions on this. Okay, what are the different 3-stage nuclear program for India nuclear reactor basically? So in which state we are currently, and what is like India's like objective or India's look towards the 3-stage nuclear power? Because if you could able to generate 500 gigawatt of electricity for 500 years, and भाव तुम 500 years विषय आ चिंता करिवार नहीं एनर्जी ऊपर कि आउ से जो कोल रो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जहां तुम ऑस्ट्रेलिया रु इंपोर्ट करिवार थिला सेगुडा सब किछ करिवार नहीं, इलेक्ट्रिसिटी ऊपर टेंशन नवार नहीं, सोलार फोलार विषय भाबिवार नहीं. You understand, right? So this can purely work on thorium, no need of even uranium. And uranium हमको दरकार ही नहीं, because thorium तमे प्रोवाइड करो से uranium बनियो. because second stage रे आमे कोन कले thorium प्रोवाइड कले uranium पाई गले, uranium 233 रे कन्वर्ट हैला, अगेन एठी तमे thorium प्रोवाइड करो से uranium कन्वर्ट हो. and आम पाखरे uranium नहीं, but India has what? India has thorium. India have sufficient amount of thorium. So from thorium, can we generate something which will provide electricity? Yes, we can provide, but that requires stage 3. Till now, the technology itself is not available, but we are trying to achieve it. Clear? Okay. Simple. This is the diagram. Stage 1, you are having U235 plus U238. This is natural uranium you are trying to use. Now in this U235, it will provide you what? Heat. But U238, it will convert to 239. That is the stage 1. That means whatever electricity you are generating, something around 20, is it 20? 12. It is 12 gigawatt electricity for 30 years. Correct? No? This heat is generated by what? जो 0.7% ऑफ यूरानियम 235 थिला सेईटा ही तुमको स्टेज 1 रे वर्तमान स्टेज रे हमर जो कमर्शियल प्रोसेस अछि सेतिरे हमें जो 12 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करछे पर 30 इयर्स, दैट इज थ्रू ओनली दिस नॉर्मल यूरानियम. क्लियर? नेक्स्ट, ए जो प्लूटोनियम 238 रहिला ताकू हमें सेकंड स्टेज को पठौजे. से सेकंड स्टेज रे ये होची फिजाइल मटेरियल. नाउ दिस डिप्लेटेड यूरानियम बेसिकली which is a fertile material, it will absorb basically, it will absorb one neutron and it will become plutonium 239. Basically 238 plus it will absorb a fast neutron, it will become 239, which is called fissile material. Now this fissile material, when it will be used, and we are providing what? Thorium 232, which is fertile. Clear? Now this 239 कोटे slow neutron te तमे add कर दियो, then ये start our reaction करिवा. If you will add one slow neutron, this Pu239 plus neutron, it will start react. Then there will be some 3 neutron will generate. These 3 neutron will try to heat this thorium. Correct? And anka pakhare aku ame use करछे कोथरे fast breeder reactor. बर्तन fast breeder reactor मने पकाओ fast breeder reactor. Do we have pressure? No sir. No. प्रेशर आम पाखरे नथिला, बट तेणु आम पाखरे जो थोरियम थिला से थोरियम बर्तन कंटिन्यू हबो नेक्स्ट स्टेज को. एंड जो टिके एनर्जी लागी, जो एनर्जी आसिला ते एनर्जी ए जो न्यूट्रॉन टा को काइनेटिक एनर्जी हो, बिकॉज़ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर रो गोटे साइड रे तमे देखिथो रिएक्टर टा एठी जो एनर्जी जनरेट हबो से जो न्यूट्रॉन गोटा 3टा लाखे जनरेट हबो, से 3टा न्यूट्रॉन अगेन बाडे हेबे कहा सहित Pu239 से पुनी 3 जनरेट करबो. एंड एगुडा सब आ स्लो न्यूट्रॉन हेकी रहिबेनी, बिकॉज़ आ भितरे हीट सफिशिएंट अमाउंट रो अछि. एमाने फास्ट न्यूट्रॉन भले बिहेव करियो. एंड जदी एइथरे ही तमे थोरियम को नेचो, बिकॉज़ थोरियम इंडिया पाखरे सफिशिएंट अछि, इंडिया पाखरे यूरानियम नहीं, तो इनिशियली तमे अल्प मात्रा यूरानियम को प्लूटोनियम रे चेंज कलो, प्लूटोनियम रे तमे थोरियम ऐड कलो, थोरियम 232. ए जो फास्ट न्यूट्रॉन अछि, ए फास्ट न्यूट्रॉन सेकंड स्टेज रे थोरियम सहित बाडे हैला, देन U233 बनिला. ए U233, this is a fissile material. Just give one simple slow moving neutron, it will go for reaction. से रिएक्शन वाला पर सी भी जनरेट करिवो, हां कि नहीं, से भी न्यूट्रॉन जनरेट करिवो ना. एंड एटा को हमें कोन कहू जे ना एडवांस्ड रिएक्टर रे. इट विल बी बेसिकली एज लाइक एज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर. तो जोथरे कि अगेन सफिशिएंट अमाउंट रो हीट थिबो, से हीट अगेन कोन करिवो, ए जो न्यूट्रॉन थिला, जो न्यूट्रॉन जनरेट हैला U233 रो, ताकू पुनी फास्ट न्यूट्रॉन बनेबो, सी थोरियम को पुनी फर्टाइल बनेबो U233. एंड अगेन रिएक्शन कंटिन्यू हो चलिबो, जोथरे कि एठी हमें पाउचे 500 gigawatt of electricity for 500 years. Second stage,
300 gigawatt of electricity for 30 years. Any doubt? See, I know it is little bit hard topic ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, but this is as it is. Basically आपको तुमको एमिति ही बुझिବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ କିଛି option ହିଁ ନାହିଁ. Simple. से गोटे काली तमे आउ थरे टिके रिपीट कर दबो लेक्चर, गोटे थर तमे निजे खाता रे ट्राई करियो ना बनेया पई हे जिवो. जदि मु आउ थरे कहबी कि मु आको बनेया पई सिंपल गोटे डायग्राम, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. You only tell no. स्टेज 1 में मु कोन नेबी नॉर्मल यूरेनियम, करेक्ट नो. नॉर्मल यूरेनियम रे कोन थियो 0.7% ऑफ व्हाट U235, 99.3% ऑफ U238. हां कि नहीं. इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन देली गोटे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, करेक्ट. न्यूट्रॉन दैट इज स्लो, तो ये कहां से अटैक हो 235 से तो एनर्जी रिलीज हो, राइट. हां कि नहीं. नेचुरल यूरेनियम प्लस तीनटा इलेक्ट्रॉन तीनटा न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा जनरेट हो, बट ए स्टेज 1 रे आपको हमें कोथरे नहीं छे प्रेशराइज्ड पे. हां कि नहीं. 235 प्रतिटी स्टेज रु तुमको कनेक्शन मिलियो कि 238 को मु जदी तीनटा न्यूट्रॉन सहित बाडेबी ए तीनटा हां ए तीनटा न्यूट्रॉन 99.3 पाखरे सफिशिएंट अमाउंट रो थिबा कोन दरकार. yes. ओके, सो आई वाज टेलिंग कि बर्तमान मते जदी तीनटा न्यूट्रॉन अछि, ये तीनटा न्यूट्रॉन को मु पुनी U238 सहित बाडिया पई रीजन कोन हे पारे. रीजन सेति कि बेला हबो जदी मु प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर नेबी, प्रेशराइज्ड रिएक्टर. हां कि नहीं. तो प्रेशराइज्ड रिएक्टर रे अगेन प्रेशर जनरेट हेतो, दैट मींस एमाने आउ स्लो रहइबेनी, एमाने हिजे फास्ट. ए फास्ट ही बाडे हबो जाय कि 238 से तो कन्वर्ट हबो कोन प्लूटोनियम 239. ऐड तमे कोन करछो एथिरे ना थोरियम. थोरियम केते ना 232. ओके, देन एठी तमे अगेन स्लो न्यूट्रॉन, and this is fast breeder reactor. ओके, तो बर्तमान तुम स्लो न्यूट्रॉन ऐड कलो, ये ता से तो मिस जीवो, देन ये जनरेट रिएक्शन कला एंड तीनटा न्यूट्रॉन जनरेट कला. ये तो थिबो स्लो, बट से जो चैम्बर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर रो जो चैम्बर सेठी सफिशिएंट अमाउंट रो एनर्जी जनरेट होजी, जोथि पई कि ए स्लो न्यूट्रॉन भी सफिशिएंट अमाउंट रो हीट एनर्जी पाइबो, जोटा कि ताको काइनेटिक एनर्जी रे चेंज करबो एंड ए माने हि जिवे फास्ट. ए माने बाडे हेबे जाय कि U238 से 32 से तो सॉरी थोरियम 232 से जोटा कि कन्वर्ट हबो यूरेनियम 233 से. एंड एठी भी तमे पुणी ऐड करिवो कोन ना थोरियम. क्लियर. तो एठी 232 अगेन एठी तमे स्लो न्यूट्रॉन ऐड कलो, रिएक्टर आसे तो हला, देन ये जनरेट करिवो तीनटा न्यूट्रॉन. बट कथा होची एठी होची एडवांस रिएक्टर, सेठी भी सफिशिएंट अमाउंट रो हीट थिबो, ए स्लो को ए माने पुणी फास्ट करे देबे, से जाय कि बाडे हे जो फर्टाइल मैटर से अगेन जनरेट करिवो U233, जोथि पई कि ये कंटीन्यूअसली जनरेट हेई चलिवो. थोरियम 232 फर्टाइल मैटर that will continuously convert into fissile metal and there will be continuous reactions. 500 gigawatt of electricity for 500 years. 300 gigawatt electricity for 30 years. 12 gigawatt electricity for 30 years. Any doubt? सी तुमको गोटे थर दि थर तीन थर लाके एडा करियो पड़ियो. वंस हे गला माने 3 stage reactor for India is clear. India doesn't have uranium, that's why we are depending on this thorium, and this stage 3 will be the boon for India in the electricity sector. Here. Okay, so this is what India's 3-stage nuclear program. I will share it. Okay, I just tried to explain how this uranium is become converted to plutonium, then we are adding thorium, then it is converting to U233. So in future, whenever you will see, you should not face any doubt or you should not face any difficulties to understand it. So the next will continue again 12 reactor we'll talk about so tomorrow, but at least for today what we try to talk about is different kind of reactors, how the reactors works, what is coolant, what is a moderator, and how we are generating the electricity. Then different kind of reactor boiling water reactor, pressurized water reactor, then we talked about boiling
heavy water reactor, pressurized heavy water reactor. We talked about fast breeder reactor and 3 stages of nuclear reactor of India. Clear? Thank you, everyone. So I think we could able to complete some good topic.